स्ट्रीम में वापस स्वागत है। मेरा नाम है केटवस90। कुछ भी करने से पहले मुझे पहले चेक करना है कि इसका ठीक हुआ कि नहीं है। आवाज़ का आवाज़ आ रही थी। हेलो हेलो हेलो। अबे यार, ये मैंने चेक किया था, रिकॉर्ड करके भी चेक किया था ये अभी अभी, और कुछ की आवाज़ नहीं आ रही थी तब। कुछ की आवाज़ नहीं आ रही थी तब। हेलो 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 हेलो। मालूम में क्या, मैं फिर भी खेल रहा हूँ। छोड़ दो, कुछ नहीं कर सकता मैं अभी। उतना बुरा भी नहीं है जितना पिछली बार था। इतना झेल लूँगा मैं। वीडियो रिकॉर्डिंग में किस तरह देखता हूँ, करने की कोशिश करूँगा इससे ठीक। पर अभी के लिए रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं और फिर लोड। इतना डिफरेंस क्यों था एग्जिट, जो भी हो। हाई प्राइस टू पे। चलो बात करते हैं नॉन The से। eye's gone completely dark. I can't reach anyone on the station. Tell me the last thing they sent. Noel, Starborn, came out of nowhere. Vladimir, get out of there! He already left. Said he was going to the lodge. Oh shit. I mean, जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जा चुका है वो। पर Barrett, he's still breathing, but oh God, all that blood. Hello, Constellation. Are you there? Who are you? What did you do to our friends? They call me the Hunter. And now that I'm here, your part in glimpsing the Unity is over. we don't mean you any harm. I'm already on my way. Say goodbye to your friends. It won't be long. Forget about us. That Starborn bastard is after the artifacts. You can't let him take them. Pack up the collection, move it somewhere they can't find it. He is right. We leave the artifacts, the Starborn will have them. What about everyone on the eye? We can't leave them to die up there. I'm not leaving anyone. I'm going to the eye to rescue our friends. पर फिर वो artifacts चले जाएंगे शायद। चलो ठीक है। That Starborn has already overwhelmed everyone on the eye. We need to stay here. I don't know how long it's gonna take to pack up the artifacts. I'll get started. Hopefully this will only take a few minutes, if my hands can stop shaking. Everyone, find somewhere to take cover! Where? Do you really expect them to barge through the front door? Just be ready, Walter. Could you all keep it down? I'm trying to work here. Good. Save. Empty. ठीक है। Ah, shit. Walter! Are you all right? Check on Walter or go to the eye. हाँ, इसलिए मैं फास्ट ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा ओवरबर्डन्ड है वो मैं।
ये सब कब मिला मुझे? Are you going? I will barricade the door once you are out. I am afraid we will not be able to let you back in. You think I'm making the wrong decision? Hi Walton भाई, लॉर करो आराम से. If I could be sure that everyone and the artifacts will be safe, I would tell you. ओह आई में चलो. अब हो गया, डिसाइड कर दिया हमने. जो डिसीजन दिया अब उसका ही फॉलो करना होगा. आई को जा रहे हम. कितना ज्यादा अनकम्फर्ट हूं मैं सही में. इतना ज्यादा भी नहीं है यार, ये सही बोलो तो. Shit. मुझे भागते रहना है. इतनी लाइफ कम हो गई यार मेरी. फुल थी मेरी. स्पेस पोर्ट. थोड़े चीजें बेचने होंगे मुझे. इतने जल्दी बढ़ रहा है यार सब कुछ. आधी लाइफ जा चुकी है ऑलरेडी. मुझे चीजें डेफिनेटली बेचना है. Anything I can help you with? And he's our new captain. Looks to me like you've already... ठीक है. Everything looks good. Here, I'll be at my booth if you need. कुछ बेच सकता हूँ यहाँ पे. ओके थोड़ा बहुत है. ये सब बेच दो. 99 पिस्टल ज़्यादा अच्छा पिस्टल है मेरे पास. ये भी एक पिस्टल ही है क्योंकि ओ इसे रखना है. इसे डेफिनेटली रखना है. मॉडिफाइड वरुण स्टार शॉट. ये सब यार इन्हें बेचना चाहता हूँ मैं. काफ़ी चीज़ें जो मैं बेचना चाहता हूँ पर बेच नहीं सकता अभी. अभी के लिए चलते हैं. ओह टकराने से जस्ट पहले मैंने डॉक कर दिया. Get up. Welcome back. Good. Hey, you need something? हाँ हाँ तू रास्ते से हट ना. वेपन्स बटन नहीं. इसे ड्रॉप करो. इसे भी ड्रॉप कर दो. इसे नहीं ड्रॉप करना. इसे ड्रॉप करो. ड्रॉप ड्रॉप. इसे रख रहा हूं मैं. फेवरेट कहाँ पे डालूं? यहाँ पे डालता हूँ.
इसे भी ड्रॉप करो, इसे भी ड्रॉप करो। इसे पता नहीं क्यों नहीं रखा हुआ है मैंने। इसकी जगह रखूं पर अब Celestials 35 39 इन दोनों के बीच में तो इसे तो डेफिनेटली नहीं निकालना है। ये दोनों सेम है यार। इन दोनों में से किसी एक को मुझे फेंकना होगा। मैं ये फेंकने की सोच रहा हूँ। साइड के साथ उतना अच्छा नहीं लग रहा, सही बोलूँ तो। साइड के बिना है बहुत मस्त दिखता है वो। 2 मिनट रुकना, कोई आया है अभी। घंटी बजी है। वापस आ गया। मम्मी का कोई एक पार्सल था। यहाँ से बाहर कैसे निकलूं मैं? ये रहा ना। मैं अभी भी अनकम्फर्ट हूँ। बहुत अच्छे है। बहुत कम जा रहा है। सारा मॉर्गन। Oh, thank heavens. You're all right. Oh, not that I've seen, but I've been drifting in and out. I'll be okay now. Go on. Take care of the others. Yeah. Oh, shit. इससे दिखा भी नहीं है मुझे। You're alive. Krix's ghost can keep waiting. Not many sights to see before I lost the lights. How did I? Saw the ship dock with the eye. We took up the arm's call, but when the doors opened, there was no one there. Skulked in like a damn specter. Before I had to know, it was nothing but pain's wings and the cold sleep. Time's unknown, but I came too long enough to hear him gloat about going to the lodge, and seeing our friends trying to crawl away from him on a bloody trail. Can't be sure yet. Starborn could have done a lot more damage. Guessing the glitter of the prize wasn't here. No tears for the old. Got the others to worry about. Okay, ये भी ठीक है। सैम को और उसकी बेटी। ओके, बेटी सही है। Dad! The others are here. We're going to be okay. पहले बैरक से बात करते हैं। Okay, I admit, my famous personality wasn't so much help with this one. Besides the big, ugly one, not that I saw. Starborn's ship came in nice and quiet. Just happened to look outside and see it dock. Everyone came running, but no one. Doors open, no one there.
Vladimir took one step towards the ship and then boom! He's in the air. Slammed those impressive triceps on one of the consoles. Cloaking device, maybe? Or one of those powers from the artifacts. Guess they're more than just a party trick, huh? Right. Okay, okay. अब सैम को से बात करते I हैं. really messed up on this one, friend. Usually the last guy to get outdrawn. I got a good look at him before he knocked me senseless. I know that stance, that arrogance. The hunter works alone. Heard someone shout that a ship was docked with the station. We were all geared up, but there was no one there. Poor Vlad got the first swing. Knocked him back into some of the computers. Lights out. That Starborn just appeared. It's kind of all a blur after that. Back at you. I don't think I'm gonna be moving around too much for a bit. But I'll be alright. Okay, अब वापस लॉज में जाना है. ये आसान नहीं होगा. लॉज में क्या हालत होगी सबकी. ढालो ट्रॉमा पैक. लॉज में भी यही हालत होगी. शायद लॉज में ही रुकना चाहिए था मुझे. अब लॉज में कोई मरा ना हो यार से. कुछ भी करने से पहले ये वाला लगाओ. इसके साथ जाता हूँ मैं. I'm planning a grocery run later. I get some things you like. वो उधर छुपा हुआ है. ये हमारी माँ बस यहाँ पे आराम से बैठी हुई है. अंदर लड़ाई चल रही होगी. वो कम से कम छुपा है हमारा बाप. और ये ग्रोसरी के बारे में भी बात कर रही है. No, no, no. Andreja, can you hear me? It's Barrett. We're here. No, not this. You just got here, Andreja. You can't go. She's gone. Oh, no. There's nothing that will change anything now. We should get moving. Shit. Took you long enough. I didn't see much. I didn't see anything, really. That hunter attacked me, I'm sure of that. I heard the others fighting him. Noelle screaming and running off with the artifacts. Noelle, she might still be in danger. There's a secret door in the basement. Leads right to the well district. That would have been the safest route for her to run. Shit. Fuck. Fuck.
fuck? Fuck यार, मैं पुराना लोड करना चाहता हूँ, नहीं भी लोड करना चाहता हूँ. Shit. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. यार. Fuck.
काश मैं इसे रीनेम कर पाता यार। नहीं ये नहीं, कौन सा है? ये वाला, काश मैं इसे रीनेम कर पाता। इन्फ्लेक्शन पॉइंट करके कुछ। I appear to only be seriously damaged instead of critically damaged. Fortunate. The hunter was able to utilize some form of cloaking. He took the members of Constellation by surprise. Noel was able to escape with the artifacts, while the rest of us engaged in hostile maneuvers. The rest was short and violent. That you are likewise relatively undamaged is also preferable to the alternative. It went quickly after you left. Walter was upstairs when he screamed. I went to check on them, and then the hunter appeared out of nowhere. We fought him off as best we could. Well, Noel packed up the artifacts and escaped. We held him off while Noel escaped through the basement. There's a door that leads to the well district. यार मैं इसी के साथ कंटिन्यू कर रहा हूं। आर्क यार मैं एंड्रेजा के साथ सोच रहा था वो मैरी वो सब करने का पूरा। Stay back! I'll... Oh, thank God. Thank God, thank God, thank God. I still have the artifacts, but where do we take them? Ah, there you are. I wasn't expecting you to run to the eye. You! You're not getting the artifacts. Yes. Let's see if they can slip from my grasp this time, shall we? Stay back! I'll... Oh, thank God. Thank God, thank God, thank God. I still have the artifacts, but... Ah, there you are. I wasn't expecting you to run to the eye. You! You're not getting the artifacts. Yes. Let's see if they can slip from my grasp this time, shall we? एक मिनट रुकना, मुझे नहीं ये वाला लगाना होगा। एट नहीं
डैमेज रेजिस्टेंस, यस, इसलिए ये नहीं लेना चाहिए था। ब्रेन इंजरी ट्रीट, बैटल सिम ये है। ये 244 ज़्यादा है। Shit. Fuck. Shit. Fuck यार। मार दिया लगभग इसे। क्या? Escape to your ship. भागो यहाँ से। हील करो। भागते रहो। ओके, लगभग पहुंच गया इसके पास। Don't make me kill you. ठीक है वॉल्टन भाई, फिर मिलते हैं। आज पहली बार आप मॉर्निंग स्ट्रीम करने वाला वैसे। भागते रहो। इस तरफ जाना है मुझे। और यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है। कहाँ पर है ये बंदी? हमारे साथ ही है ना? मारते रहो तुम लोग उसे। बैरेट भी वो रहा। कॉकपिट। Unrestrained vengeance.
But now, I think I'll just kick back. Enjoy the long road. In case you didn't notice, I have a way of getting around unseen. Although I'll admit, retreat isn't a humiliation I've had to endure in some time. You should be proud. There's a greater purpose to all this. You might have a larger role than I realized. A mistake on my part. Keep collecting the artifacts. We'll meet again. Maybe you'll glimpse the unity and... Fuck. मैं अभी भी वो फिर से लोड करने की सोच रहा हूँ यार. जो हो गया सो हो गया. गलत बटन दबाया, मुझे बोर्ड करना था. You're back. Thank the blackest sea that you and Noel are safe. And the artifacts? The lodge. So, we slipped from the Starborn's grasp, but not before taking a stab straight in the heart. We need to talk locks and bolts. Lodge and the Eye are not secure. Just means he's playing the waiting man's game. He'll be back once we've done all the work of collecting the other pieces. The hunter, he probably found us because we're somewhere obvious. High-populated area, just like how the Starborn found you orbiting Neon the first time. But the fact that they're competing with us to find the artifacts means they can't get them without searching. So we put the artifacts somewhere in the fringe, or on something that can slip from their grasp if they do another strike from the curtain. Oh, that won't make the lodge eye more secure. Clear from the few encounters we've had that the artifacts are all the Starborn prize. They could come after us, though. Try to find out where we put them. Need to take the risk. The Eye, the equipment in the lodge, not easily moved. Gotta hope whatever is giving the hunter pause applies to the whole. Just need to make another direct hit less the jackpot. Fine idea. Starborn show up, you can burn helium in one spin of the grav drive to anywhere. Here, keep the artifacts safe. I guess we'll meet back at the lodge after. You can now build the
artillery on your ship or at your outpost. To build artillery on your ship, go to the new artillery screen inside your ship's cockpit. To build the artillery at one of your outposts, go to your outpost and enter the build mode. Then there will be a new quest category that contains the artillery. Shit, yaar. शिप में ही करता हूँ. You can now move the artillery. Starborn attacks are more likely wherever the artillery is placed. If you choose to keep the artifacts in your inventory, then attacks are more likely everywhere. मैं खुश हूँ उसके साथ. जी पे ये सब छोड़ो. आर्मिलरी का है मेरे. Return to the lodge. अभी भी सोच रहा हूँ यार लोड करूँ कि नहीं. एंड्रेशिया को डेफिनेटली नहीं मारना चाहता हूँ मैं. इतना सब कुछ कर चुका हूँ ऑलरेडी मैं. फक. ओह फक यार सही में. चलो मेरी खुद की गलती की वजह से मरी. अब मैं कुछ कर नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली. मुझे लॉज में रुकना चाहिए था, उसे बचाना चाहिए था. मैंने नहीं किया. वो मर गई. अब वो डिसीजन मैं नहीं बदलूंगा. बेच सकता हूँ अभी भी ना चीजें. बैक. ओह इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये ओह डैम ये एक लेजेंडरी पिस्टल है और ये डेड आई नॉर्मल पिस्टल है. एक मिनट रुकना. मैं इन्हें थोड़ा कंपेयर करना चाहता हूँ. तो पहले डेराई को इक्विप करो और फिर कंपेयर करते हैं. मास ज़्यादा, फायर रेट कम है, एक्यूरेसी ज़्यादा है, मॉड्स कम है, पेनेट्रेटर राउंड उससे ही बड़ा है इसका. तो फिर ठीक है मैं इसका बढ़ा सकता हूँ. मैं ये पिस्टल को बेच रहा हूँ अभी के लिए डेडाई पर. एक मिनट रुकना.
ये एक है। ये दिखने में उतना अच्छा नहीं है यार इसके साथ, बस वही प्रॉब्लम है। ये अगर चेंज कर सकता हो तो मैं डेफिनेटली रखूँगा, और उसे बेच रहा हूँ मैं। चलो छोड़ो। डेड आई को भेज रहा हूँ मैं, मेरे पास ज़्यादा अच्छा है ये। बी और अब चलते हैं। एक ही जगह है जाने का अभी तो। If you were a victim of the recent attack, please remain calm. UC security has everything under control. बंदे ने ये पूरा का पूरा तोड़ दिया। बस सही बोलूँ तो अब सारा को भी रोमांस करने का मन नहीं कर रहा है। पहले मैं सोच रहा था सारा को भी रोमांस करूँगा और फिर बाद में डिसाइड करूँगा उन दोनों में से किसके साथ मैं शादी करूँगा। पर एंड्रेजा के मरने के बाद पता नहीं सारा का रोमांस भी करूँगा कि नहीं। We should head back. See how everyone is doing. हाँ, जा रहा हूँ। जाके देखते हैं एंड्रेजा का क्या हुआ, बेचारी। अपेरेंटली मैं सबको सेव कर सकता था अगर मैंने सारा को रोमांस किया होता पहले, क्योंकि सारा ऑलरेडी आई में थी। तो मैं आई में जाता और वेल वहाँ पे दोनों बैरेट भी हैं और सारा भी हैं, तो दोनों को बचा पाता मैं। और अब जो कर दिया सो कर दिया। Andresia's belongings have been moved to the lodge basement. Fuck! ठीक है, पहले यही कर रहा हूँ। Andresia's outfit. ये सारे ले रहा हूँ इसके, और कुछ भी सेल नहीं करने वाला मैं। मेरा रूम कहाँ पर है? Constellation has suffered losses before, although none quite so violently. Look, we all feel like we've been kicked into the ground a million times over, but I think I have something. I'm serious. ठीक है, तुझसे बाद में बात करूँगा यार। 2 मिनट रुक जा, मुझे एंड्रिया के सारे चीज़ें अपने उसमें डालने हैं, अपने रूम में। अब मेरा रूम था कौन सा वो भी मुझे ठीक से याद नहीं। यही है मेरे हिसाब से मेरा रूम। नहीं, ये एंड्रेजा का रूम था। स्नेक स्किन तरह लग रहा है वो थोड़ा। सैमको का, ये कोरा का है। बैरेट का होगा शायद। यार मेरा रूम कौन सा था? ये सारा का है।
एक मिनट. The following is an excerpt from 2283 SSN News report about constellation near collapse. And although the constellation's relevance has been a subject of much debate among the New Atlantis intelligentsia, the disappearance of founder Sebastian Banks was a blow most felt the organization couldn't survive. In fact, the constellation's disbanding seemed imminent until member Chloe Bao changed her vote in the 11th hour, thus ensuring the group's continued operation at least for the time being, as well as her unexpected appointment to the position of chair. हमारा रूम कौन सा है यार, मुझे याद नहीं. ये तो उस बंदे का लग रहा है. हाँ, यही है हमारा क्रोनोमार्क. मुझे याद है जब हम आए थे हमने ये देखा था. ये कलेक्टर्स एडिशन में ये मिलता है. तो फिर अब ट्रांसफर. वेपन्स ये उसमें जाएगा, ये उसमें जाएगा. ये तो मुझे मिला था. स्पेस सूट उधर जाएगा. ग्रेट. कौन सा था उसका? ये था शायद. And Reisha's outfit. Sturdy refined UC marine balance pack ना, ठीक है. Packs sturdy refined का है. सब का सब उधर जाएगा मेरे स्टोरेज में. एंड राइजा के सारे लीजिए. और शिट, मैंने कॉर्नर रेगुलेटर वापस ले लिया. वेपन्स कॉर्नर रेगुलेटर डाल दो. ये यहाँ पे रहेंगे पूरे समय. एंड्रेशा का कुछ भी नहीं छूंगा मैं. अब जाके बात करते हैं. If I may, I know our encounter with the hunter is the last thing anyone wants to talk about right now, but he said something that I can't get out of my mind. Unity. Do you remember that? Because he was stopping us, implying that we were getting closer to it. The thing is, I've heard that word before. It's an important concept in Keeper Aquilas's speeches. The priest? Is the Sanctum Universum going to bless our little crusade of discovery? It can't be a coincidence. The Sanctum has always believed that answers are out there in the stars. Look, I know it's the longest of shots and the biggest leap of faith I could ever ask us all to take, but why not talk to him? It's right here in the city, just a block or so from the lodge. I don't mind taking a detour to gather data. Only thing we'd lose is time, really. Thank you. I know it's not much to go on, but something about this feels right. I'll meet you over there. Forget it. Why don't you take a place like the lodge for granted? Until it's threatened. कौन है मेरे साथ? Morale in the lodge has been measurably reduced. यार, सैम माफ करना, तू भले ही बैठना चाहता हो पर तुझे मेरे साथ आना होगा अभी.
यहाँ पे है ना सैम का. Things are gonna be... We'll get through this. Those Starborn aren't gonna stop us. Now, you know me. I'm always up for the next adventure. Sam, you two better have some good adventures to tell me about later on. Adventure is my middle name. Well, not really, but now I kind of wish it was. ठीक है. चलो चलते हैं. Wouldn't mind burning some helium out in the fringe instead of being here, you know? Fuck यार. बेचारी एंड्रेशिया. लॉज में रुका होता तो मैं उसे बचा पाता, पर फिर बैरन मर जाता. Talk to Keeper Aquilus. Heard the Covenant's assembled some kind of elite anti-terrormorph unit. About damn time. Wonder if they're taking applications. वो हाँ मैं. अब वो कब का हमने कर दिया जो भी करना था एंटी टेररमॉर्फ यूनिट को. भाई तेरे पास कोई ना कोई जवाब होना चाहिए यार. बंदे को मारना है मुझे, साले हंटर को. भी आगे ही बढ़ना है इधर ही. मैं उम्मीद कर रहा था रास्ते में कोई एक मर्चेंट या कुछ होगा. काफी चीजें बेचने हैं मुझे. ये रहा. मेटेओ भी है यहाँ पे. Keeper Aquilus, can we have a moment? Oh, Mateo. It's been too long. How are your parents? Your mother still struggling with that azalea garden? No, she figured that out a while ago. Had to adjust the pH levels in the soil. But, Keeper, I didn't come to catch up. Oh. Well, what's on both your minds? Mateo को ही बोलने देता हूँ. Keeper, we were hoping to talk to you about unity. You want to subject your friend here to one of our talks, Mateo? The future of humanity is always a long discussion. No, that's not exactly what I meant. Keeper, when you talk about unity, well, does it mean anything else? Something secret? Perhaps you should talk about this inside. वेल ह्यूमंस ही हैं लगता है. इन्हें मालूम है ये यूनिटी के ग्लिम्स ऑफ यूनिटी के जो बात कर रहा था वो हंटर साला. Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you two here? We were attacked by a group called Starborn. We've lost people, Keeper. Oh, I'm so sorry to hear that. And these Starborn, I take it they're different from the people of the settled systems? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe, beyond rational thought. We enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become, and yet the risk is made anyway. So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. And it's brought you here. I think I can. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path of discovering its meaning. There's an old story
far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems and saw every corner of it. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. In my story, the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun, and he gave them each a part of the truth. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum, his addition or contribution to the infinite. But what if the story isn't a metaphor, but a code, a way of finding the pilgrim again, or at least his grave? I agree. I think you need to talk to them about this unity pilgrim. And clearly, not just in a theological sense, as I have. Because I wasn't looking to find unity in the same sense you are. A fresh set of eyes might reveal the truth. Oh yes, typically. But there is a lone zealot that was captured recently for attacking UC ships. I've visited her a couple of times. Hopefully, she'll be willing to talk to you as well. And if you need directions to the Enlightened, they have a branch in the Well helping the poorest citizens of New Atlantis find a better life for themselves. I'll stay here with the Keeper. We need to catch up. And I wouldn't mind asking him a few more questions. हाउस वरुण एंड्रेजा जिसकी भाग थी. यार उस पे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है अब ये सुन के कि हाउस वरुण से बात का नाम है. एंड्रेजा मदद कर सकती थी उसमें. वरुण टॉक टू हाउस ऑफ एनलाइटनमेंट. यहाँ पे चलते हैं पहले. Has seen so much. I'm really glad I can talk to him when I need to. ओके. खुश है कि तू खुश है, उससे बात कर सकती है. मैं तो उससे एक ही चीज जानना चाहता था उससे कि ये हंटर को कहाँ पे ढूंढ सकता हूँ साले को. मालूम है क्या, यहाँ पे जाता हूँ पहले तो यहाँ के पैसे पूरे ख़त्म करता हूँ. ये वैसे भी मुझे कुछ ज़्यादा कुछ खास देता नहीं है. कुछ खरीदूंगा नहीं I would never इससे. dream of selling substandard gear. Please do. I hope we have something that suits you. Get it? एमओ भी बेचता है. ठीक है. नहीं. बाय. सेल. नहीं. हेलमेट्स. apparel. इसे बेचो. ओके, इसका कुछ नहीं बेच सकता अनफॉर्चुनेटली. मिसलेनियस में कुछ बेच सकता हूँ. नो. रिसोर्सेस में भी नहीं. ट्रिप इन्वेंटरी. सबको भेजा.
भाई इसके पास कोई वेपन नहीं है. Be careful out there. अभी मैं डाल नहीं सकता अपने सारे जो भी रिसोर्सेस पकड़े मैंने. Unless resources. Nope, definitely नहीं डाल सकता कुछ भी. चलो वरुण प्रिजनर से बात करते हैं. ये देखते हैं ये क्या बताता है. यार बेसपोर्ट में क्यों है वो? That's convenient. Kila City could really use something like that. वरुण प्रिजनर से पहले बात करना है. और यहाँ पे हूँ वैसे तो. Resources, store all resources, yes. ये हो ना finally अब encumbered नहीं हूँ मैं. Cora likes throwing stones into the pond. Or she did. God, that was ages ago. कहाँ पर है वो साला? मैं इसे गाली क्यों दे रहा हूँ? By the way, Captain, Sergeant Yumi was looking for you. Sounds like he's got more work. Okay. वो बाद में कर लूँगा मैं. सही में ये करना चाहता हूँ. मिर्जा. You have a nice day now. एंड रेशा इसमें कितना मदद कर पाती इसके साथ बात करने में. A visitor? I have all the company I need. He knows not the truth. He sends another to ask more incessant questions. The Great Serpent waits in the shadows. He will entwine the universe, and all but the faithful will be made as dust. That is the truth. No more, no less. The knowledge of the Great Serpent sweeps away all concern. There is only his inevitable return, and those he will spare. Nothing else. You wish to speak of the Keeper's Pilgrim, do you not? I will tell you of him, and then you will leave. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the Great Serpent, he does not hesitate. He cuts the unbeliever down. But the unbeliever returns. Jinan realizes the Great Serpent is testing him, and he will not be found wanting. 4 times they fight. Over 120 rotations of the planet they are on. Remember these 4 battles, Jinan. The unbeliever says, remember these 120 rotations. But Jinan knows this is blasphemy, and delivers the killing blow. That is all. I have heard of no such thing. If it exists, it is a shadow that the Great Serpent casts to deceive the faithless. Strength and conviction show your worthiness to the Great Serpent. The kill is not as important as showing there is no doubt. I grow tired of speaking. Leave me. मुझे समझ में नहीं आया ये 4 battles 120 rotations planet के. क्या हर एक battle 30 rotations हुए क्या? Resource 5 health. 2 health. Oh well. Unfortunately मैं चोरी नहीं कर सकता. You see security guard.
नहीं रुकना, सॉरी सिक्योरिटी की कार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। अब यहाँ पे आ गई। जा 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 चले जा, ये अभी ना बात। यूसी सिक्योरिटी की कार्ड मिल गया मुझे। अब इसे खोल सकता हूँ क्या उसके साथ? ना। I know your type. The freewheel and space ace. Must be nice. भाई मैं एक यूसी वैनगार्ड हूँ। वेल, इससे बात हो गई है, अब बात करनी है, क्या था उनका नाम? द वेल में जाना है पहली बात I'm तो। surprised I've yet to see the inside of the security office. Let's hope the streak continues. और कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट नहीं। वेल में कैसे जाऊं मैं? वेल कहाँ है? द लॉज। वेल कहीं पे भी नहीं है फास्ट ट्रैवल करने के लिए अनफॉर्चुनेटली, और यहाँ पे भी मैं अब तक पूरा एक्सप्लोर किया नहीं हुआ। इधर ही है या फिर नहीं, इधर साइड से है, इसके अंदर नहीं। द वेल। Trying to cut down on terror brew, but I think As a tracker agent, my duty is to inform and advise. ओके क्या? ओह यहाँ पे अंदर जाना है। We run a number of social programs, from financial aid to food banks. If it's about the financial or food assistance programs, we are backlogged. Don't worry, we're doing everything we can. Oh, we're not. Sorry. Can I help you? Listen, I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of a Unity pilgrim. But since you both insist, our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling notes, charity expenditures. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have to what Aquilas is describing. Yeah, I mean, he's always going on about trying to bring people of all beliefs together. Really wants there to be some shared story or origin. Look, I like the Keeper, but belief is the problem, okay? We don't need a shared narrative or theology. We need to help each other in practical terms. A man walks into the first house of enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no, the Drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person? That second person might disagree. Isn't the problem of two what you're really looking for? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Same conversation every time. Second person this, the problem of do that. It's part of our core principles. There's no God pushing us to do good for some eternal reward. We have to help each other because we choose to. If no one takes responsibility for making the settled systems better, then we're just leaving it to the tyrants to bully the rest of us. Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. Besides what the Keeper would say about it, sounds like a gathering point, or a center. Or in mathematics, it would mean one, like the one, the first or the beginning.
Always happy to help. If you'll excuse me, I've got a lot of aid efforts to coordinate. Return to keep Aculus, huh? Chalo. Mess with me and I'll serve you my famous knuckle sandwich. Scared, aren't ya? Nope. You think Deimos Staryards would hire? What am I saying? Of course they would. I'm the best. Okay, उधर कैसे पहुंचना मुझे? यहाँ से ना, ठीक है। थोड़ा समय लगा ये क्या बोलते हैं मेन स्टोरी को पकड़ने में। पकड़ना सही शब्द नहीं होगा। चॉइस शब्द मेरे हिसाब से होगा मेन स्टोरी को अपने आप को दिखाने में, ऐसे बोल सकते हैं। और ये क्वेस्ट के बाद डेफिनेटली मेन स्टोरी ने अपने आप को दिखा दिया इस गेम में। बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। अब देखते हैं ये क्या बोलेगा। कीप एक्युलस। सही में अब ये मेन स्टोरी करने का मन कर रहा है। सही में ये कंटिन्यू करूँ, स्टोरी के बारे में और पता लगाऊं। अब तक बस यही कर रहा था कि साइड के क्वेस्ट की स्टोरीज मुझे ज़्यादा अच्छा लग रही थी और ये मेन क्वेस्ट ऐसे ही बीच बीच में करते जा रहा था क्योंकि वेल मेन स्टोरी है, कभी ना कभी तो करना ही है। पर अब सही में करने का मन कर रहा है ये। Oh, you're back. What did you learn? Was there something hidden in their stories, like we thought? That must mean 4 times over 120 over 120 days, और ये दो अलग अलग हैं। तो पहले इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ सही में। If there really is a location the pilgrim wanted us to find, those do sound awfully like coordinates. What else did you learn? Yes, what he added to infinity. Maybe that points to a name. If we're looking for his resting place, we'd need to know the name of the star system, wouldn't we? Was there anything else? और एक आखिरी, second and 2. Planets are often named by number. That second might mean the second planet in the system. Let's see. We have something that could be coordinates. Something that could point to a planet in the system. But what's the name of the system? Infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. That just leaves in and dumb. Well, that's certainly how I feel. Well, I suppose that'll make someone laugh. Indum, that's the name of the star system. Yes, that's it. The second planet in Indum. At 4 and 120. That's where you'll find the pilgrim's resting place. And from there, maybe you'll find the true meaning of unity. Before you go, you've now spoken to many different perspectives in our universe. In a way, you'll be carrying their philosophies with you on this journey. I know you're looking for a specific unity, but if you had to guess what it was, what interpretation would you give it? Only total conviction is, and I need to. Oh, I need to take responsibility for finding it. Nope, ये definitely नहीं. Unity.
And once you know, what will you do? Even the most objective scientist holds the belief that observation itself will be of benefit to humanity. You will be taking a similar part of yourself with you when you find the answer. Will that not color your perception of it? It doesn't give me license to define unity beforehand. ये दोनों में से कोई एक मैं चुनूंगा. The benefit of science is that a person's thoughts can be tested. और ये इसके साथ जा रहा हूँ. मैं इसे डिफाइन नहीं कर सकता हूँ जब तक मुझे मालूम ना पड़े खुद. और मुझे अभी प्रॉपर आइडिया है नहीं यूनिटी क्या है. So you're committed to keeping yourself from seeing unity as anything other than a rational objective. A goal you're bound to reach. Well, I won't keep you any longer. This has been fun, I have to admit. Go, find your truth. Kingdom 2 ना. तो फिर चलते हैं. कहाँ पे जाना है? एक्सप्लोर. यहाँ पे एक टेंपल के लिए गया था. हाँ. सिर्फ नॉर्मल है मेरे हिसाब से जाना है. अभी कोई दिखा रहा नहीं है कहीं पे लैंड करने का. Pilgrim's Rest. ये बेचना है. अभी के लिए इसमें डाल देता हूँ और थोड़े अपैरल्स को भी डाल देता हूँ. 5% O2 रिकवरी. ये दो जरूरत नहीं है. ये ठीक है. जरूरत है. ये इसकी जरूरत नहीं है. रेस्ट एंड हेल्थ की जरूरत नहीं है. काफ़ी कर दिया अभी के लिए. अब जाके ये पिलग्रिम का जो ग्रेव साइट है, पिलग्रिम्स रेस्ट, उधर चलते हैं. ये क्या है यहाँ पे? सर्च फॉर क्लूज ऑन यूनिटी. हाँ ठीक है. पिलग्रिम्स रेस्ट. कोई होगा क्या यहाँ पे? वो बंदा तो नहीं होगा मेरे हिसाब से. द हंटर. उसके अलावा ये उसकी शिप है. नहीं यार, ये उसकी शिप नहीं हो सकती. इसमें कोई बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता. ये पावर जनरेशन के लिए विंड टर्बाइन टाइप का ऐसा डिजाइन मैंने देखा है. विंड टर्बाइन ही है मेरे हिसाब से. तो चलो देखते हैं यहाँ पे कौन है. Pilgrim's writing. The credulous simplicity of mundane humans never ceases to amaze me. My worst instinct, the evil spirit, draw me towards a form of contempt for them. But I remember that I am privy to that which they are not. I cannot and should not judge them for a lack of vision when I know very well the blinders which obscure their sight. I once wore them myself, after all. I hope for their sake that they may someday understand. But for my sake, I wish to be left alone. बंदा अपने आप को मसाया टाइप का समझ रहा है.
उठा लो। Pill bottle. Access the locked room. Oh, okay. Book 5 है ये. मुझे book 2 चाहिए पहले. एक मिनट रुका. मैंने book 1 के साथ ही शुरू किया ना? हाँ, Pilgrim's Writing 1. 2, 3, 4 और फिर 5 यहाँ पे आऊँगा वापस पढ़ने के लिए. एक और हाँ, यहाँ पे कुछ हो सकता है. Book 2, 3, 4 शायद. Book 2. So here is the crux of my troubles. To accomplish anything, I need to work with other people. I need assistants. I need workers. I need hands. As we work together, they inevitably ask questions and I can never help talking. It starts innocently enough. They want to understand how someone who believes in science can also believe in the divine. Or they have their own misunderstanding instilled by some borderline religious remnant. My weakness is my inability to let alone. I want them to understand, so I try, gently as I might, to nudge their minds along the right path. Then there are follow-ups and followings. The trouble is that I genuinely care for these people. It would be so much easier if I didn't. Okay, ये बता रहा है कि धीरे धीरे इसका कैसे पता रिलीजन या जो भी है इसका, जो भी बोलना चाहता हूँ. और इसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं है, तो ये रिलीजन काफ़ी छोटा रिलीजन है. First shock of cold. Is it weird that I like it? Industrial workbench. Toxin. ये 4 है, मुझे 3 चाहिए. और ये रहा 3. Today, in a soft voice, my assistant asked me if there was anything about the unity. It was all I could do to keep from shouting that I could scarcely comprehend the misunderstanding that would lead to such a question. It was asked honestly and I answered as best I could, but even my closest confidant here can fail to grasp the most basic of these truths. Why am I bothering to explain any of it to any of them? Every word that drops from my mouth gets gobbled up, misheard, misremembered, misunderstood and mistranslated before I can issue the slightest clarification. People are necessary, but people are madness. I attempted to withdraw, to go off alone, to commune with unity in my own way. They followed. Of course they followed. Of it 4 up. At last, a bit of peace. A piece of peace. Is that anything? Is that funny? Why am I trying to be funny? Have they driven me mad at last? Is there a difference between writing to myself and talking to myself? The former certainly seems more acceptable than the later. I recall again that my mind is my own, and that even if only it exists, that is sufficient for me to believe in everything else. The unity has restored me once more. This time I act alone, for now. Myself is a formidable opponent. I should have expected as much, but vanity is, thankfully, not among my vices. Regardless, it turns out time spent in solitude is, in my case, time with a very sick man. Or whatever it is I have become. I don't like this person. ये थोड़ा वैनिटी नहीं है इसका. थोड़ा मैं बोलने वाला, थोड़ा वेन है. थोड़ा नहीं, काफ़ी वेन है ये. ऐसा बोल रहा है कि उसके अलावा बाकी सबको कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ उसे सच्चाई मालूम है. वो वेन नहीं है तो और क्या है? वैनिटी नहीं है तो क्या है? और अब फाइनली बुक 5. I find myself thinking about his various pasts and my possible futures. I imagine continuing on the road, acquiring more power, more knowledge, more development of myself. I imagine passing through once more to another world to begin the process anew. What is notable here, that road does seem gratifying. Every step is one of intrinsic reward, and I feel myself anticipating the pleasures and seeing a more contented version of myself in that future. Then, for the sake of considering all possibilities, I imagine if I took a different path, if I stopped running, stopped seeking to gather my own power, if I instead embraced the twinges of compassion I feel in my heart, and I let myself care for the people who seem to gather about me wherever I try to work. If I simply lived and thought and perhaps brought others to the light and died. That road also seems gratifying. I also see a contented version of myself in that future. Here is the difference though. When I stop thinking about the glories I could achieve for myself, the pressure fades nearly immediately. When I stop thinking about staying and building something, the feeling endures. There is something more sustaining about it, more fulfilling. I don't know what this difference signifies, but I'm grateful for the time I've taken to notice it.
प्लेजर ग्लोरीज खुद के लिए, वो प्लेजर नहीं मिलता उसे फिर, पर वो स्टेइंग एंड बिल्डिंग समथिंग फीलिंग एंड्योर्स, ग्रेटिफाइंग फीलिंग जो है, ठीक है। अब ये हो गया। If you came seeking the right answers, you will know what questions to ask. What is unity? I return your question with a question. If you have read my readings, what is the burden of people? People are necessary, but people are madness. Who is your most formidable opponent? Myself. Where does enduring contentment come from? Enduring contentment. Growing, becoming better, stronger. ये मुझे याद नहीं, enduring contentment. That is an answer, but it is not. Find my readings, read them closely. Shit. Contentment का मुझे याद नहीं. No need hands. ठीक है, ये नहीं है. और 4 कहीं पे कंटेनमेंट है. Oh shit. Step is one. No, gather my power. Shit, फर्स्ट वाले में क्या कंटेनमेंट कहीं पे भी नहीं है वर्ड. Gratifying. I also see a contented version of us. Compassion. Compassion. ठीक है. What is the unity? People are madness. Myself. You came here seeking the true meaning of unity. If you still wish to find it, there is one final piece of myself in the next room. I found my own answer a long time ago, but not in the way I was expecting. I hope your journey gives you the truth. $135, हाँ? ना, मेरे पास जो है वो ज़्यादा अच्छा है, पर वो ये उसका कोई वो होगा ना, मॉड लगा होगा, इसलिए वो 200 के ऊपर है उसका. वो चेक करना होगा मुझे थोड़ा. क्राफ्टिंग डेफिनेटली इसको चाहिए. इंक्रीजेस EM वेपन डैमेज बाय 5%. नाइस. कॉम रिले. और फिर अब ये पढ़ते हैं. Pilgrim's final writing. I don't know what the correct answer is. I might never. Increasingly though, I am comfortable with not knowing. The more I reflect on being here, in this world, in this time, the more I think it is precisely where I need to be. This time will be different. It won't be about me, so I won't have to run. I can actually build something with intent instead of scrambling to fix something that others create in my name. It can be something beneficial. It can be something... I can be something beneficial. I'm leaving behind that other person. This world has no place for him. Let him die. Let me live to enlighten the blessed universe before me. You have found the end of my journey, but to know everything you must find its beginning. On Hyla 2, the island hides the scorpion, and the scorpion's sting hides the truth. Find the scorpion's sting on Hyla 2, huh? ठीक है? Hyla 2 का है. Holy shit, इतना दूर है कि इधर तक जा सकता हूँ. हाँ, लड़ाई का ना हो जाए मैंने, क्योंकि सेव भी नहीं किया है. बहुत धन्यवाद. मैंने सेव भी नहीं, गलत बटन. एक्चुअली नहीं, मालूम है क्या, ये सही बटन दबाया. मुझे पहले आगे बढ़ने से पहले सेव करता हूँ मैं. Ancient ruins.
लैंड। Moon of highlight 2. Oh, it's many colored glory. Okay. हमला नहीं कर रहा। Those ruins, they look ancient. Oh, Vladimir would go nuts for this. Barrett too. ये हमें लेके जा रहा है क्या सीरियसली? वाह भाई वाह। ओ हंटिंग इकोराडॉन, ये हम पे हमला करेगा। ये क्यों हमला कर रहा है हम पे? ओके, मैं इसके पास से नहीं जाऊंगा, इसके पास से जाऊंगा। एक्टिवेट। फाइंड द स्कॉर्पियन स्टिंग। ये क्या स्कॉर्पियन स्टिंग? समझ में नहीं आ रहा है। उसके पास गया था पर वो कुछ दिखा रहा नहीं था। फिर से ट्राई करता हूँ। समझ में नहीं आ रहा सही में। Find a scorpion sting on Hyla 2। मैं क्या पहले अपने आप को हील कर देता हूँ। ट्रॉमा पैक कहाँ है? ये रहा। Restores 10 health। मुझे लग रहा है इनको मारना है क्या? सेव करो पहले तो। दो को मार दिया। अब नहीं, तो वो गलत था, तो बेकार में उसका क्यों करूं मैं?
एक मिनट, ये बाबा दबाने से कुछ हो रहा है क्या इसका सही में? समझ में नहीं आ रहा। ओह ऐसा है, मेरी गलती। कहाँ पे ले जाना है इसे? यहाँ पे ना, ठीक है। Go to the last star of the Scorpius constellation. अब वो कौन सा है? इधर चलता हूँ। क्लास बी शिप होता तो मैं पहुंच जाता उधर। क्लास बी शिप बना पाता तो इधर तक एक शॉट में ही हो जाता। ओबोरम प्राइम। जंप करो। तीन, दो, एक। तो सारे के सारे हमारे खिलाफ नहीं हैं, हमारे ये आर्टिफैक्ट करने के खिलाफ। ये बस हंटर ही है क्या? हंटर और ये जिस किसी भी फैक्शन में एक हंटर का एक सेपरेट फैक्शन है और एमिसरी का सेपरेट फैक्शन है। वो दोनों, हंटर हमारे खिलाफ है, एमिसरी एम्बिवेलेंट है मेरे हिसाब से। यप, वॉर एग्जैक्टली नहीं है पर वो एक दूसरे के खिलाफ हैं ये दोनों फैक्शंस जो हैं।
में क्या 820 XP, oh wow. रेडी रखूंगा बाई चांस अगर इसने चेंज कर दिया अपना। पीछे से इसका डॉग का थोड़ा घूमता हूँ पहले, देखता हूँ कैसे है। छोटा है काफी, सही बोलूँ तो, पर दिखने में काफी अच्छा है। Do you remember the emissary, perhaps? And their ship, the Helix? I believe they ambushed you above Neon and demanded that artifact you worked so hard to gain. Thank you for the stellar introduction. Your success is unprecedented. Before you came, we were just discussing how continued use of force against you is unwise. Yes, we did. We are not a monolithic people. The Starborn are individuals. Some are united in cause. Others are in it for themselves. We are all in it for ourselves. Some of us are just more honest. The emissary threatened your ship, demanded you hand over your artifact. How is that so different from what I did? We needed to warn you off. Every encounter with one of our kind could spell disaster. For whom, exactly? I say whoever can collect them should. And who gets to say that? You? Me? The emissary? I have debated morality for near infinity, and all I have found are groups of people enforcing their will on others. Rules and laws spoken as principles, but backed by arms and violence. Enough. We have more to discuss. The Unity. You are on the path to it. It is a place, a gateway. It is where we were reborn. I will admit, I did not think you would get this far. But then most of the settled systems can be quite confusing to me, still. एंड्रे शायद मैं डेफिनेटली गलत एंगल से ये बात शुरू की इनकी यार। I'm not who you think I am. This universe is only the first one you've been to. I've seen hundreds. Where I came from, I was the one who ran to the Eye. I left you behind to protect the artifacts, and the hunter killed you. One of me, at least. I collected the remaining artifacts, and they opened the way to the center of my universe, and the doorway to an infinite number of others. That is the Unity. When I stepped into it, I became a Starborn. It is how I've entered other worlds, including yours. I have to. This is bigger than all of us. All
the artifacts are needed to complete the armillary and open the way to the Unity. In every universe, the Starborn fight over them. Innocent people die. You've witnessed the power granted by the temples, the anarchy that can be unleashed. Someone has to decide who should get them. Here it comes. The emissary tells you only the worthy should enter heaven. You're twisting what I mean. They're hypocrites. They use the chaos caused by the hunt for the artifacts to establish an order where they decide who's worthy. I attacked your lodge because I wanted the artifacts, and you held me off. You got away. That wasn't some morality play. You didn't survive because of righteousness. You won because of persistence, luck, and skill. As I have done countless times. I was also human once. But what does it matter who or what I was when eternity is within your grasp? It means I've seen thousands of universes, collected their artifacts, been to their temples. You have a small taste of their power, but it keeps going. I'm nothing like you, but इसी के साथ You mean yet? Go through the Unity 1,000 times and you'll gain a better perspective. I have hopes for you. Higher hopes than the other members of Constellation. They all end up like the emissary. You've never come this far, not in all the universes I have seen. The path to the Unity is opening to you. You're going to tip the scales one way or another. Better your hand be on one of our sides. I'm not helping someone who murdered my friend. वो तो सही है. But you are already in it. With artifacts come Starborn, searching for them, fighting over them. I want a truce between all three of us. Give you some time to think over which approach to the Unity is the one you want. Mine, or the Hunters? Yes. Let's see how willing you are to live under someone else's rules. Just remember, one of us isn't trying to judge you. ये गलत डेफिनेटली यार. यहाँ से बात यहाँ से बात करना चाहिए था. प्रॉपर्ली फेस देख पाता मैं वो दूसरे यूनिवर्स के एंड्रेशा का. I'll tell you everything I can. When all of the artifacts are assembled, the device they create is called the armillary. In many ways, it's a model of the multiverse itself. Through it, you can reach the Unity. And from there, you can become Starborn. It's never aliens. You've seen the terror the Hunter causes. Every time a Starborn goes through the Unity, they get more artifacts, find more temples, gain more power. We can't let more like him abuse these gifts to destroy whatever is in their way. Different. I never know who you are when I meet a new version. But so much of you stays the same. It is hard, but each universe is precious in its own way. Mine will never have its original you in it again, as yours won't have its real me.
It is not an easy experience to describe, but the Unity will speak to you, offer you the chance to become Starborn. You will be leaving this universe behind to be reborn. Everything you were before will be gone. Maybe that is why it offers the choice. Compassion, or is it testing us? मतलब वापस अपने पुराने यूनिवर्स में नहीं जा सकता। हंटर वही करने की कोशिश कर रहा है क्या, वापस अपने खुद के यूनिवर्स में जाने के लिए, वहाँ पे जो लोग हैं उन इसके खुद के लोग हैं उनसे फिर से मिलने की कोशिश कर रहा है शायद, या फिर उसे बस ताकत चाहिए। अभी मान पड़ जाएगा, इससे बात करके देखते हैं ये क्या होता है। You might think the emissary is on your side, but your persistence is what forced them to tell you the truth. Remember that. तेरे साथ कभी नहीं जुड़ूंगा मैं। तूने एंड्रेशिया को मारा है, मैं तुझे मारूंगा। The emissary and their kind only want to control you. They enter the Unity, take artifacts from others, employ force. All the things I do. I am many things, but I would never tell anyone what to do with their gifts. That is your decision, not someone else's. The emissary wants to become the judge of who gets to enter, but the Unity itself doesn't judge. To see what would happen, of course. You might not understand just how many times I've done this. Usually, you're the one who ends up dead, and whoever cries over your body goes on to become the emissary. Sometimes I manage to get you all bunched up and take care of the problem in one go. Sometimes the emissary has gotten to me first, and I never arrive. Hundreds and hundreds of variations of me, packing through Constellation. And it's almost never you. You making it to your ship on your own. That's new. I took it as a sign. I don't get many of those anymore. जैसे बात करता है सब कुछ, हंटर नाम एकदम सही है इसके लिए। No, we always end up having this meeting at this time. But it's the usual affair. Can we make peace? No. Oh, how tragic. Honestly, I was beginning to wonder why I kept tending. And it's a bad habit I started a long time ago. Perhaps I just like meeting the emissary to gloat. But you have provided something quite new to talk about. Maybe you're a random die roll. Or maybe the Unity is finally responding to all my hard work. I've simply found that it's the quickest way. Talking, forming alliances, waiting for the right moment to commit theft. It's all so tiresome. I'll admit, you getting away has been the most interesting thing to happen in quite some time. As soon as I realized what had happened, I knew I needed to wait until this meeting with the emissary to decide what to do about you. Whoever created the artifacts and built those temples is playing a game with us. One whose prize is access to the center of all creation. There are no rules. Whoever gets all the pieces wins. And I've won. Over and over. I don't kill for the Unity. I find the easiest pathway to it. Okay, definitely इसके साथ नहीं जुड़ूंगा मैं।
Every waiting follows. Before you leave, I want to give you something. A way to another artifact, but also a lesson in how dangerous they can be. Seek the moon of Old Earth. There are secrets there that you must discover for yourself. Here, to open the way. Yes, I will say no more. And I am sorry we have not always been forthcoming. I hope you will see what I have seen. You should also talk to your colleagues in Constellation. I am sure they have gathered more information on the remaining artifacts in the fringes of space. Part of me wonders what they will all say about what you have learned. But I will leave that to you. Nova Galactica Research Station? एक मिनट रुकना। नहीं, ये नहीं। Oh shit। पहले रिटर्न टू द लॉज करता हूँ। एक और चीज देखना है, मेन अनअर्थेड, हाँ, और रिटर्न टू द लॉज। कॉकपिट और लॉज में जाते हैं आप। मैं जानना चाहता हूँ बाकी सब लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में। लैंड। I don't want to like it, but I got to admit, New Atlantis is classy. Smell that? I would bottle that up if I could. Musty old books, a bit of motor oil, and history. Okay. Hey, I've been talking with the others, and I'd like to get everyone together to say goodbye. You know, to Andrea. Definitely visit करूँगा ये। Thank you. It wouldn't be the same without you there. I'll have everything set up in a few days. By UT days, ये ध्यान रखना होगा। अभी के लिए इन सबको बताते हैं। Mateo told us about your pilgrim's voyage. You found it, didn't you? The meaning of unity. Wait, say that again? Multiple universes? You can't possibly mean what I think you mean. Let's take a step back. This is everything we've been building towards, and the implications are a lot to take in. Could you explain the part about multiple universes one more time for everyone? Yes, I wouldn't mind a little more detail. Okay. Andreja या फिर ये ठीक है, ये बताता हूँ सीधे। यूनिटी क्रिएट्स स्टारबॉर्न, ये मेन चीज है। And that's why the Starborn want the artifacts so desperately. They're the keys to unlocking the infinite. I don't even want to think about the physiological changes you'd need to travel between universes. Plus what it would do to the mind? Enlightenment? Or oblivion? Like the Hunter. You have the opportunity to reach the closest thing to your god that might exist. And you're second-guessing it? One doesn't approach the afterlife without some trepidation. You're right.
We have to see the unity for ourselves. I know this has been a lot for everyone to take in, but we finally have answers. Let's make the best of them. Not to make a sharp turn in a grand tale, but I got the eye fixed up. Bruised, but still blinking. Let me know when you're ready to follow up on what it's seen. Okay. Dusty. Dusty. Let's talk. Okay. There's that empty feeling again. Whenever someone's gone, there's like a hole in the lodge where there used to be. Listen, you risked your life to save me. I keep wondering if that made it harder to save Andreja too. I've replayed those moments in my mind over and over. And you need to know that you did what a leader does. And if it had been me instead of her, I would feel at peace knowing that she made it. It's impossible to consider the what ifs. मैं हमेशा what ifs सोचते ही जा रहा हूँ ये इसका भी. अगर मैं यहाँ पे रुका होता, ये लॉज में रुका होता, अगर मैं ऊपर नहीं गया होता, तो एंड्रेजा अभी जिंदा रहती. I know, but I can't help it. I don't know if you're ready to talk, or if you need 20 years to get to that point, or if you never want to talk about it again. But I just want you to know that if you do, I'm here for you. I'm definitely not at peace with my decision. I wanted to save you both. When Irvin was killed in the war, people said it was random. The wrong place at the wrong time. I bet Mateo will soon tell me that the cosmic balance of me being in the right place at the right time was compensation. But in the end, it doesn't work that way, does it? Random is just random. I would definitely not choose you again. मैं definitely रुकता, लॉज में रुकता, एंड्रेजा को बचाता. चलो. Of course. Could have been so much worse. We are all constellation. When a star goes nova, it can destroy everything nearby, or it can nourish a new era of planets and life and everything that goes with it. The galaxy is littered with the deaths of so many brilliant, wonderful stars. But if stars never went nova, then we wouldn't be who we are now. I didn't, until I started to work through it with a friend. But it is happening, or rather it has happened. It is up to us to make sure it never happens again. Andreja was a force of nature, a wave of ambition, and delightfully weird. I can't say I knew her heart, but she was a member of Constellation. She knew who her enemies were, and she would not have counted you among them for this. I wish this had never happened. We all have the same wish, but wishes are just that. All we can do is decide how to move forward and use our time wisely. You know, we're fortunate. Constellation brought us all together, and we're all better for it. If we're going to set things right, it's going to be because of that. यार मुझे मालूम होना चाहिए था वो एंड्रेजा मर सकती है वो हंटर के साथ. वो ही बाबा बोलते जा रही थी कि हमें यहाँ पे रुकना चाहिए. हाँ हाँ, जब मैं जा रहा था वो बोल रहा था you're going, मुझे तभी रुक जाना चाहिए था, लॉज में को डिफेंड करना चाहिए था. सोचता नहीं हूँ मैं, पहले जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया, उधर ही जाता हूँ सीधा. सही में यार. 2 मिनट है ना. हेलो, इससे बात करते हैं. Yeah, sorry if I'm a little out of it.
Didn't get much sleep last night. Lillian and me, I tried talking with her and I lost my cool. Got a little heated. I know I woke Cora up. Well, up until a few years ago, she kept hoping we'd get back together. I mean, Lillian and I stayed married longer than we should have for Cora's sake. But we really weren't doing Cora any favors there. Well, that statement's gonna keep me up at night, like everything? Just so you know, there's a long, proud tradition of singing in the shower. Ah, Lillian. She's an incredible woman. Truly. But it is always, and I mean always, about the job. When she bleeds, Freestar colors spill out. And back when I was a ranger, we were quite the team. I never had much passion for law enforcement. But there were days I was damn proud to wear the uniform. And other days, too messy. I mean, we always walked the line well. Lillian is good that way. But some laws I think are horseshit. Like ruining lives because some barroom brawl got out of hand. That never sat well with me. I'm meant to be on my own. Exploring the great beyond. It calls to me. Maybe it's Solomon saying hello. But one day, I was just done. No particular reason. It had been building for a long time. See, I tried to convince Lillian to leave it behind, come with me. She shot me down. Hard. Hurt my pride. More than a little. But she was probably right. We were making each other miserable. And that wore on poor Cora, too. It's funny, our latest argument started because Lillian thinks I'm putting Cora in too much danger traveling with you. I told her what you told me, that Cora is just blossoming with all this. With Sarah, you, heck, even Walter. I just know Cora has futures I could never dream of. But Lillian, not so much a fan of you. That kinda set me off. Nah, don't be. It's always something. Cora's been stood up a time or two by Lillian. Always for the best reasons. Last time I think Lillian got a medal for it. But at a certain point, Lillian's excuses don't matter. Poor Cora cried for a week. I don't want to put her through that again. If I do that, y'all might want to invest in some industrial-strength earplugs. For now, Lillian's going straight to voicemail, so everyone can sleep easy. Okay, इससे भी बात का हो गया. मालूम है क्या अभी इसका नहीं. मुझे थोड़े और ताकत चाहिए. Wait for the service. 5 UT days. I mean, कोई और तरीका है इसका करने का? ये सीधे बस सोने का है और कोई रास्ता नहीं है. मैं इस पे ध्यान रखूंगा पर ये पहले मुझे थोड़े और ताकत चाहिए उसके खिलाफ लड़ने के लिए. हंटर के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे और ताकत चाहिए सही में.
एक नॉर्मली तो दिख रहा है पर वहाँ पे जाना है हमें। अरे यार इसका मेरी हेल्थ कम नहीं हो रही ना? ओके नहीं, अभी के लिए इधर के लिए जाते हैं हम। ज़्यादा कुछ और कर नहीं सकता हूँ, पर उससे पहले एक और चीज़ मैं देखना चाहता हूँ। 2 स्किल पॉइंट्स है ना। सर्वेइंग के साथ जाऊँ या फिर और कुछ है? बूस्ट पैक का भी है, टारगेटिंग कंट्रोल सिस्टम। टाइम इज रिड्यूस बाय 50, टारगेट लॉक शिप फायर एट यू 25% स्लोअर। ओह ये बुरा नहीं है। बूस्ट पैक एक्सपेंड्स लेस फ्यूल, ये अच्छा है। जनरेट्स मोर क्विकली, ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है। पर ये उतना कुछ ज़रूरत नहीं है मुझे। पर इसके लिए मुझे खर्च करना होगा इस पे। मुझे वेपन इंजीनियरिंग चाहिए एंड में, और उसके लिए मुझे मेरे हिसाब से अब सारे हो गए। मैं अब वो ले पाऊंगा उसका दो रिसोर्स। क्या ले पाऊंगा? मैं क्या बोल रहा था अभी? दिमाग में पता नहीं कुछ बोला था, दिमाग में अब आ रहा ही नहीं है वो। कॉपर है वहाँ पे, यहाँ पे भी कॉपर है, सब जगह कॉपर है, कॉपर ही कॉपर है। वो वाटर है, वो भी स्कैंड ऑलरेडी होगा मेरे हिसाब से। ओ नहीं, और हो गए। फ्लोरीन, फ्लोरीन ऑलरेडी स्कैन कर दिया है। 5 हो गए, 3 और चाहिए अभी यहाँ पे। इतना धीरे क्यों चल रही है? इतने धीरे चलना जरूरी है क्या? नाइस यार, अच्छा है वो। टेम्पल टॉप, इस तरफ कहीं पे बता रहा है। यस, चलो ये लेते हैं आप जल्दी से। और वो स्टार बॉन्ड को मारना है, जो भी आएगा, जिस किसी भी फैक्शन का हो, मैं उसे मारूंगा। और तो जल्दी से पहुंच जाओ इधर। कहाँ पे? ओह, मैं अच्छी थी, मैं सही जगह ही जा रहा था पहले से।
नहीं 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 नहीं, नया कौन सा लिया था मैंने? ये वाला ना। कहाँ है ये? इसे लगते ही जा दिया। ठीक है, पर ये हो गया। अब व्लादिमीर से बात करूँगा तो मेन क्वेस्ट भी आगे बढ़ेगा, पर ये पिछला क्वेस्ट काफ़ी इंटेंस था सही बोलूँ तो थोड़ा ब्रेक चाहिए अभी। तो किसके साथ डिफेंस मेजर्स, फर्स्ट कॉन्टैक्ट, नहीं ये नहीं, डीप कवर का करें या फिर लोकेट एयर रिफॉर्म, ये सब छोड़ो। मैंटिस, ओके, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी का करते हैं। यहाँ पे ये रहा सीक्रेट आउटपोस्ट ना। Ship. This here is our fight. So you can get the hell out or we'll kill you. The lair of the Mantis is ours. 5, 4, you get the hell out now. 3, 2, oh, it's on. Damn it. Got company, I think. Action time. मरा। ओह, एक शॉट में मरा वो भी। Looting the dead ain't glamorous, but it sure is profitable. $3,000 के ऊपर वाला ही उठाऊंगा अब से मैं। ऑलरेडी बोल दिया था, और ये 3,000 के ऊपर है। ओह डैम, काफी चीजें हैं। पॉलीमर फाइनली। नॉप, पर ये ले लूंगा। हाँ, इसका कितना करना है? I mean, लोग कहाँ हैं इधर के? ओह, वहां पे 2 दिखा रहा है। हाँ, मैं क्या पहले इसे मार दो। ये मारा, और इससे बचो अभी यार। एक शॉट। ओह ओह शिट। यार मैंने ये वाला वापस क्यों लगाया था? ओके, क्यों किसी एक चीज के लिए याद नहीं आ रहा है। फोर्स नहीं, ब्ला 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 ब्ला, प्री ग्रेविटी वेव, ग्रेविटी डैश। ओ ये डैश का मैं देखता हूँ। या मर गया सब। क्रेडिट्स डेफिनेटली, और ये भी डेफिनेटली क्रेडिट्स भी दे दे ना। फ्रैग ग्रेनेड चाहिए।
डैश 10,000 6,000 वाह भाई वाह। एक यहाँ पे कहीं पे था ना, एक मिनट रुकना। और कोई नहीं है ना, चलो आगे बढ़ते हैं आप फिर। फाइनली यहाँ पे अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है लेयर ऑफ द मैंटिस में। I could really bend your ear when you got a moment. It's good to be out and about. Lodge gets stuffy sometimes. ना 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 ना, ये डिजिपिक, अरे मुझे लगा था वो डिजिपिक होगा शायद। Learn more about the layer of the mantis. सिर्फ एक ही चाहता हूँ मैं, लेयर ऑफ द ये करना चाहता हूँ, बाकी सब छोड़ो। मुझे ना तो किसी से बात करनी है अभी ना कुछ। एक मिनट, क्या? ओह शिट शिट शिट, नहीं गलती करी। ओ मैंटिस, लेयर ऑफ द मैंटिस में ही नीचे कहीं जाना है। मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं अभी करंटली? काफ़ी ज़्यादा हैं, और अगर बाहर जाऊंगा तो उन रिसोर्सेज को मैं मोस्ट प्रॉब्ली अंदर डाल सकूंगा अपने शिप में, क्योंकि मैं उतना भी दूर नहीं हूँ अपने शिप के। हाँ डेफिनेटली डाल सकता हूँ। इन्वेंटरी, रिसोर्सेज, एक शॉट में मार दिया उसे। नॉप द गोल्ड माइन, 3 हेल्थ, इसकी भी जर्नी। ये गोल्ड माइन के बारे में एक बार थोड़ा पढ़ते हैं। दिस लेयर इज अ गोल्ड माइन. The mantis was loaded, the salvage top notch, and the good stuff's got to be further in. The payout's going to be extreme, just got to survive until then. Traps took out Caver and Jiang. Livy volunteered a couple of others from Iron Dave's crew. Poor bastards. Just got to stay off Livy's radar. Okay, ये गोल्ड माइन है apparently, काफी अच्छा है ये इसका लेयर, और वो सब हमारा होने वाला है। नॉप ये हाँ, क्या हो गया इस बेचारे को? Help, yes. Listen up, scumbags. The assholes are on the move, and we've got to be ready. No, not the UC. Not the Freestar Collective. The ones that matter. Pirates, mercs, and those religious nut jobs. We always knew there were some places left over from the Colony War. Bases, labs, stuff like that. But now it's come out that there are even more. A lot more. Spread all over the settled systems. Looks like the Big Two didn't play by their own rules when they were playing war. Now it's a friggin' feeding frenzy. Everyone trying to find them. Trying to use them. So why shouldn't we? We have just as much right as they do. So let's go looking. Basic communication. कोई लैब्स वो सब के बारे में बात कर रहा है शायद। You're doing well, Leon. Almost there. I know. Things have been difficult.
The mantle of the Mantis is a heavy burden, but you can do so much good. The Spacers and pirates need someone to fear, someone to check them, to make them realize some lines cannot be crossed. You have it in you, Leon. I know you do. Stay sharp, focused, just a little further. Okay. वन शॉट में मार दे रहा हूँ. ये उससे लगती है. Oh shit, heal करना होगा. बाल बचा. Better we get it than someone else. No. कुछ भी नहीं चाहिए इससे. You need something? ये रहा ना. मैं इसका ढूंढते जा रहा था. कहाँ पे है, क्या है? So met with a lawyer and was prepared to party. Hard. The video will was emotional. Mom and I stopped talking years ago. Mom didn't look good. But it was Mom. As weird, crazy, and cryptic as ever. I'm almost surprised she remembered she even had a son. It was hard to hear. Almost touching. But then the punchline. No inheritance until I go to Mom's secret base on Denebola 1B. And she ends not with an I love you or an I'm proud of you. No. Sic semper tyrannis. My God. Always with that stupid Latin saying. Over and over she'd say that damn thing. Thanks, Mom. Thanks oh so much. एक्सपर्ट लॉक. हाँ, देखते हैं क्या है उसमें. चलो करते हैं ये 3 गोलों को पजल सॉल्व करते हैं. पहले बाहर वाले के साथ शुरू करने वाले हैं. ये हुआ ना बात. और फिर अब 2 और ऑपोजिट एंड में वैसा कोई भी नहीं है. क्लोजेस्ट ये है. ये बिल्कुल भी काम नहीं करता. ये शायद काम करे. यप, ये हो गया सबसे बाहर वाला. अब नेक्स्ट लाइन का करना है. ठीक है, 1 2 3 हो गए. 1 2 3 4. शायद हो जाए इससे. नोप, ये 4 हो गए. पर ओ ऐसे वाला एक है. ओ, इसमें इस्तेमाल हो रहा है. ऐसे ये 2 हुए. फिर इसके साथ कौन सा कर सकता हूँ. ये 2 3 हो गए हैं. नॉप, अनफॉर्चुनेट पर ये है ना सही. ओके.
1 2 3 4 5 2 वाला चाहिए मुझे बस। अब ऐसा कोई नहीं है। दो को लो। ये कौन से वाला है यार इसका? ये है। ये नहीं चलता। हाँ। ओके। ये वाला वैसे भी इधर नहीं आता है, तो फिर ये तो अगर मैं लूं। ओके ओके। कोई एक सिंगल वाला नहीं है ना, इसके लिए वो प्रॉब्लम है, तो फिर नहीं। इन दोनों क्या होता है इससे? इससे ये ऑलरेडी हो रहा है। ओ नहीं, ये वाला होना नेसेसरी है अनफॉर्चुनेटली। एक दो तीन चार, 1 2 3 नहीं। एक दो तीन चार, 2 वाला है, पर फिर बाकी 2 का नहीं होगा। देखा, ये वाला भी फिर से प्रॉब्लम इसके साथ है। सिर्फ और सिर्फ इधर ही होगा और कोई नहीं है, तो ये वाला कोई फायदे का नहीं है। ये सेम नहीं है तो शायद ये भी वही प्रॉब्लम है इसके साथ भी। लेकिन यस, 1 2 3 4 हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ अंदर का बचा है ना, तो करते हैं वो। इसका है 1 2 3 4 हो गया। वेल, इसके सारे हो गए, तो करते हैं ये। और मैंने क्यों हिलाया इससे? ये एक है और ये है ना। ओह, मैं भूल ही गया था यार कौन सा था इसका। एक तो ये है डेफिनेटली, 2 3, फिर ये ना। हाँ, क्रेडिट। गलत बटन। ऑप्शनल का अभी भी हुआ नहीं है।
मेरे हिसाब से तो मैंने सारे के सारे इसके देख लिए हैं। मेरे हिसाब से नीचे जाने पे और भी ज़्यादा आएंगे। ऑप्शनल का दिखाएगा। क्रेडिट्स के लिए धन्यवाद। Credits, tombstone, yes. What the fuck? उनके शरीर कहाँ गए? ओह वाह, उनके पूरे शरीर के टुकड़े हो गए। ठीक है। जा। अब बस एक लेवल 8 वाला बचा है। और नहीं। This feels like old times. 22 का भी एक है, लेवल 22 का। अबे। Cute. Real cute. मान में क्या? क्या है मेरा? नहीं। ये रहा ना। अलविदा। They're gone. You got time for a quick chat? अभी नहीं। Leon's corpse, huh? Appreciate it when you're able. Oh shit. जा। इसे मारने के बाद मैं अपने आप को हील कर दूंगा। ओह शिट, ओह लेवल 48 शिट। नहीं कौन सा था वो? ये रहा ना। ये लेवल 48 और हंटर वाला लेवल 48 अलग 48 लेवल से है। Time to tango. जा और ये मरा। ओ ओके बार 8000 सही है। और भी कितने आएंगे यार यहाँ पे? ओके ज्यादा अंदर है वो। आराम से जाऊंगा उधर। यहाँ से पूरा देखो कुछ क्या पता। चिप रिपेयर फंडामेंटल्स। फायदा क्या है इसके लेने का अगर पढ़ नहीं सकता इसे मैं तो। Oh, the real trick to spaceship repair is to focus on the immediate and pragmatic, to ask yourself what should I be addressing. Close.
मैं इसे फेंक रहा हूँ। बेकार में स्पेस क्यों दूँ इसे, जब वो कोई बूस्ट भी नहीं दे रहा। स्पेशली सही बोलूँ तो इसे बूस्ट देना चाहिए। Sure, just keep grabbing everything. Talk. 8,000। Oh damn, 36,000। 3,000 के ऊपर है। क्रेडिट्स इक्विनॉक्स जरूरत नहीं। और ये है असली। Mantis? No way. I mean, the mantis is a fairy tale. Someone to keep pirates from going off the deep end. I guess it's possible. She never talked about where she got her fortune. And man, she could handle herself anywhere. It's a lot to take in. यहाँ पे वापस आ रहा है तो ओ वहाँ पे दिख रहा है मुझे वो ग्लास है मेरे हिसाब से, ऐसा ग्लास जिसके पार मैं तोड़ नहीं सकता अभी। यस सेव करो और फिर एक और मास्टर लॉक को अनलॉक करने का शुरू करते हैं। ना ना सबसे बाहर पहले ऐसा कोई भी नहीं। हाँ ये रहा ना फाइनली, ऐसा कोई जो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, इससे थोड़ा और दूर चाहिए। ये कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया। लेकिन 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 1 2 3 वाला कोई है? नो ये अच्छा है। ओ ये यप बाहर वाले हो गए सारे। हाँ ये रहा ना 1 2 3 4। नहीं ये कुछ ज़्यादा ही पास है। तार वाला कोई है नहीं। और ये भी है ना। और फिर एक बहुत दूर वाले 2 जो हो। ओके यही है ना। यप ये और ये बाहर वाले के लिए, नेक्स्ट रिंग के लिए ये और ये नहीं, ये और ये। हाँ अब थर्ड रिंग। ये रहा, शायद इससे कर सकता हूँ मैं। हाँ थर्ड रिंग भी हो गया, ये और ये बचा सिर्फ आखिरी रिंग। ओके सारे कर दिया, तो शुरू करते हैं। 1 2 नहीं 3 4 ये not bad. Oh shit. 8 ठीक है। 5 डैमेज रेजिस्टेंस वो चाहिए मुझे डेफिनेटली। मुझे कोई डैमेज रेजिस्टेंस वाले चाहिए। बैटल सिम चलता है पर हर बार वो ही यार इस्तेमाल करते जाऊंगा क्या। सही में
10,000 के ऊपर है। ठीक है, ले लो। मैंने इसे मारा भी नहीं, मुझे कोई एक्सपी भी नहीं मिला इसका। 20,000 डेफिनेटली अच्छा है। कहाँ पर है ये लोग? ओ कहाँ पर है? शिट, एक मिनट। नो, फिर भी लगा। ओ, यहाँ पे आ रहा है बंदा। अबे आ जा यहाँ पर। इसका मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा, सही बोलूं तो। ये एकदम सही है, बहुत अच्छी। अब इसे ये तो लगना चाहिए इसे। ये भी नहीं लगा इसे। मरा? वो मर गया क्या ये? नहीं, बस एक बचा अब। डिजी पिक डेफिनेटली चाहिए। ना ना, हाँ हाँ। पैसा कम्युनिकेशन। एक मिनट, यस पैसा कम्युनिकेशन मिला था ना मुझे। नहीं, पैसा कम्युनिकेशन नहीं। ओ, वो नोट्स में होगा। ओके ओके, सबको मार दे आप यहाँ पे। उडामा 10,000 डेफिनेटली। ओह यार, ओह 190, बाप रे बाप। लियोन वॉकलिंग। अपने खुद के बेटे को मार दिया उसने। मीले वाला बंदा था ये। नेविगेटर पैक, नेविगेटर, ये सब। और भी नीचे जाने का है। नो, हाँ, और भी नीचे जाने का है आगे। पहले सबसे ले लिया ना मैंने, जो कुछ भी लेना है। हाँ, एक्सपर्ट लॉक फिर से। यहाँ पे भी अनलॉक एक्सपर्ट है। ट्रॉमा पैक, मेड पैक, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे सही में इसके। ये वेपन के साथ शुरू करता हूँ।
और फिर शुरू करते हैं एक्सपर्ट को अनलॉक करने में। बाद में देखूंगा इसको, ये है ना, और फिर ये यहाँ पे, ये और ये बाहर का हो गया। तीन है क्या ये? हाँ, ये कौन सा किया था मैंने? ये 1 2 3 ही है ना? हाँ, ये और ये सेकंड रिंग है। फर्स्ट रिंग का कौन सा किया था? ये और ये, ठीक है। और ये सेकंड रिंग है ना? एक दो तीन, और ये हो गया। चलो, ये आसान था, उतना मुश्किल भी नहीं था। ये और ये 18,190 फिर से सही है। और फिर ये भी एक और एक्सपर्ट लॉक। चलो शुरू करते हैं ये वाला एक्सपर्ट लॉक भी। सिर्फ और सिर्फ बाहर का कोई ऐसा है क्या? ये रहा ना? ओ नहीं, ये ऑपोजिट साइड में है। प्रॉब्लम वो है ना। नो, शायद ये शायद कर सकूं। नहीं, मुझे लग रहा था ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा ये करने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 2 वाले नहीं हैं। वो एक्चुअली है, काफ़ी ज़्यादा करना होगा, पर हाँ हो गया ये। 1 2 3। अब सेकंड वाला करना है। Shit. मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा लगता है, क्योंकि ये और यही एक तरीके हैं वो करने के। या फिर नहीं, ये नहीं कर सकता। 1 2 3। अब ये और ये नीचे 2 के लिए मुझे कोई और ढूंढना होगा अनफॉर्चुनेटली। इस पूरे के लिए मुझे कोई और ढूंढना होगा। अब ये हो गया। आसान था। ये और ये अब है, और सेकंड वाले के लिए है ये और ये। अब सिर्फ आखिरी वाला बचा है। एक दो तो 3 ना। ये है क्या? यप, चलो मिल गए। तो शुरू करते हैं। ये और ये फिर ये और ये। नॉप, पर ये हाँ।
वो लिया था क्या मैंने? हाँ, वो चोरी कर लिया है, तो अब सीधे जाके इससे बात करते हैं। दो मिनट देना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। एक्चुअली मालूम है क्या, लंच का काफ़ी समय हो गया, तो सेव करता हूँ पहली बात तो। कंफर्म। और आज का स्ट्रीम यहाँ पर ही बंद कर रहा हूँ। तो वॉल्ट एंड भाई और वॉल्ट एंड भाई के अलावा बाकी सब जो कोई भी जुड़े थे आज वाला क्यों दिखा रहा है अभी भी? हाँ, वॉल्ट एंड भाई के अलावा जो कोई भी स्ट्रीम में जुड़े थे, स्ट्रीम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे लंच के बाद मिलता हूँ।